today we are going to discuss about few of the keywords. That is this, super. Okay. This and super are keywords. So what are these keywords for or used for? So this is used for uh, or it acts as a, you can say it acts instance of the same class. Okay. It acts as an instance of the same class. Fine. जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो instead of that this will be acting as the object of the same class, right? That way. वैसे ही super it will act, okay, act as a instance of the parent class, or you can say super class, right? Inheritance के केस में super will be coming up. Super means parent class के object को हम लोग refer करें, right? That way. So that is the basic difference between this and super. And for both, the rule set is they cannot be accessed, okay, inside the static method. Okay, अगर method नॉन स्टैटिक है, अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया है तो आप दिस और सुपर को यूज कर सकते, बट अगर मेथड स्टैटिक है तो यू कैन नॉट एक्सेस. दैट इज द रूल सेट. ओके, फॉर so let's use them. Okay, in case of constructor, okay, we'll take the example of constructor. See, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास किए थे, क्रिएट किए थे. दिस इज अ पैरामीटराइज constructor having parameters inside it is nothing but a parameterized constructor. So I will call it as a parameterized constructor. Okay. Now, what are the two global variables? These are non-static global variables: integer I, string s, and char c. Right? हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्या कर रहे हैं? हम जो भी वैल्यू यहाँ पास करेंगे 50 और टेस्ट, that will be assigned to L and str. These are local variables. और फिर L की जो वैल्यू है वो हम लोग फिर ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं. वैसे ही str की वैल्यू हम लोग ग्लोबल वेरिएबल s में असाइन कर रहे हैं. C में हमने बाय डिफॉल्ट a दे दी. ओके, वहां पे कुछ वैल्यू पास नहीं. So now what happens if I make this L as I? यानी जो ग्लोबल वेरिएबल का नाम है मैं वही नाम दे देता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे L के बदले I लिखना पड़ेगा, right? So if I am calling this constructor from the main method से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. सो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो और 50 वैल्यू पास हो रही है, तो 50 वैल्यू कहाँ जाएगी? It goes inside I. This is a local variable I. Now this is a global variable. That is what we write. Global variable is equal to local variable. You are assigning the value. But if you can see, there is a warning sign. What it says: assignment to variable I has no effect. Able to see this part? The assignment to variable I has no effect. As in Java or this program, this Java JVM is not able to identify which one is a local variable and which one is a global variable. आप I is equal to I लिख रहे हो, तो what does that mean? ये भी global variable है और ये भी global variable है, या दोनों local variable? So what you are trying to achieve over here? We cannot say it, right? We cannot differentiate I. So if I want to differentiate this I from this particular I, okay, then I can use this as a keyword. Okay, so this मैंने क्या क्या है? It acts as an instance of the same class. So instance, these are instance variables.
नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स, बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करते हैं उसको। अगर मुझे स्टैटिक मेथड में आई या एस को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट से। विदाउट ऑब्जेक्ट आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो? नो। तो दे आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। और जो स्टैटिक होंगे उनको क्या कहा जाता है? क्लास वेरिएबल्स। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल्स बिकॉज हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये आपको हमेशा याद रखना है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, इंस्टेंस एंड स्टैटिक क्लास। इंस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉन स्टैटिक को हमें एक्सेस इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करना है, राइट? जैसे यहाँ पे किया। क्लियर? अगर यहाँ पे हेलो। मैं गेटर में सर, आपकी जो वॉइस है ना वो बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, हेलो। जस्ट yeah, I'm able to hear you. Let me change the ओके सर। okay. Now able to am I audible clearly? यस सर। यस सर। Fine. So now what I have to do? I have to differentiate these I. One is local and one is global. यहाँ पे हम global रखते हैं और यहाँ पे हम local रखते हैं. So what we will say? We will just say this dot. Okay, this dot. So automatically, just so जैसे आप this dot करोगे, it will be able to access all the global variables and methods. See, this dot C I S इन सबको एक्सेस कर पा रहा है। इवन जो आपके कंस्ट्रक्ट के मेन मेथड है उनको उसको भी एक्सेस कर पा रहा है। सो यूजिंग दिस कीवर्ड हम अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट बिकम्स एन इंस्टेंस वेरिएबल, दैट मीन्स इट बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल। So in global variable you are assigning the value of a एक यूसेज ये है कि जब आपके लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू सेम है या नाम सेम, वेरिएबल का नाम सेम है, इन दैट केस वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो हम दिस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे आपको काफ़ी सारे यूसेज आपको मिलेंगे, राइट? जनरली हम लोग क्या करेंगे, जब वेब ड्राइवर देखेंगे तो वेब ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और बहुत सारे क्लास से हम लोग उसको एज अ पैरामीटर की तरह पास करें। तो नाम, वो ऑब्जेक्ट का नाम जो होगा वो सेम रखें। जहाँ भी हम लोग उसको एक्सेस करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पैरेंट क्लास और सॉरी लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो वहाँ पे हम लोग दिस यूज करेंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट ये कौन से वेरिएबल हो जाएगा? इसका तो कोई फिर यूजेज ही नहीं होगा ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है अगर आप दिस यूज नहीं करोगे। नहीं, वो सही, हाँ लेकिन दिस यूज किया हाँ तो जो ग्लोबल वेरिएबल आई है हाँ उसको बिना ऑब्जेक्ट के हमने एक्सेस किया अ, तो वो एक ऑब्जेक्ट भी बनाया है और एक दिस से भी एक्सेस कर रहा है। नहीं नहीं तो नहीं, अभी वो मेमोरी लोकेशन में क्या है? हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दिस, सी हर ऑब्जेक्ट अपना एक अलग से मेमोरी बनाता है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी यूज करता है और वेरिएबल स्टैक। तो ये दिस से जो आप आई को एक्सेस कर रहे हो ये अलग इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब अलग मेमोरी स्पेस है। इट हैज नो मीनिंग विद दिस वन। C1 से कुछ मीनिंग नहीं है। अगर आप C2 ऑब्जेक्ट या C ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका उससे आई को एक्सेस करोगे, दैट इज डिफरेंट। C डॉट आई इज ऐसा बोल डिफरेंट। सकते हैं कि एक अलग से ही एक हाँ हाँ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो आप दिस से एक्सेस कर सकते हाँ हैं। हाँ, डिफॉल्ट और ऑब्जेक्ट आप जितनी बार उसको यूज करो मतलब डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है डिफॉल्ट इंस्टेंस यूज। सो और C एक डॉट आई इज डिफरेंट। कंस्ट्रक्टर का एप्लीकेशन कंस्ट्रक्टर मैंने बताया ना, इट असाइंस वैल्यूज टू द ग्लोबल वन इज दिस वन। ओके, अदरवाइज आप असाइन नहीं करना चाहते तो आप कोई लॉजिक भी लिखो। Important thing is constructor is invoked at the time of object. So it's a method. It simply is a method. जैसे आप normal एक method बनाते हो, constructor भी एक method। लेकिन
नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर एक्सेस। यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो हम लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए, isn't it? तो दो चीजें हैं, दो यूसेज है, एक तो वैल्यू असाइन करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकंड इज टू व्हाट यू से रन अ लॉजिक, जैसे मैंने यहाँ सिस्टम लिखा था, सिस्टम कस्टम टू वन स्क्वायर, तो इसके बदले में कोई लॉजिक भी लिख सकता हूँ, ये सब चीजें ना करो, लॉजिक लिखो। तो आप जब ये कॉल करोगे, ये लाइन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉल होगा। मैंने आपको ये बताया था, राइट? दिस लाइन what it does, it opens your Chrome browser. Sir, your voice is. My voice is breaking. I'm on Wi-Fi connected using Wi-Fi. I don't know. Is everyone facing the issue with voice or it's only few minutes? Yes, sir. Same issue. I have changed Wi-Fi itself. आप लोग को कनेक्टेड नहीं है ना Wi-Fi से? Just a minute. Let me change the. Is it clear now? Am I audible? Everyone? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Fine. Clear with this, Randa? This usage of this? Same way, you can go for super, which acts nothing but as an instance of the parent or super class. So, इसका example हम लोग inheritance के case में देख सकते हैं. Say for example, we had CentOS car, right? This. So, car is my parent class, right? And CentOS is my child class. Okay. So, say for example, I'll create public void access. I'm just creating a method just to give you an example of super. Okay. So this is a non-static method, access parent. Right? If I say super dot, then I'm able to access speed and acceleration which belongs to car. ये जो method मैं लिख रहा हूँ access parent class, this belongs to CentOS, right? अगर यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ integer I equals 10. So super won't be able to access I. Super should not be able to access I, right? Because I belongs to CentOS, which is a child class. तो super से हम सिर्फ parent class को ही access कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो car के variables और methods को access कर पा रहे हैं. Same way object के methods को access कर पा रहे हैं. Get is a method of car class. So CentOS के अलावा आप car और object के methods और variables को access कर सकते हैं. यानी parent class के variables और methods को access कर सकते हैं. Right? So that is nothing but the usage of speed. Yeah. So using super, ये जो स्पीड है वो कार में जो वेरिएबल था उसको आसान super and class car. Okay. इससे हम वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो सेम मेथड दोनों में रखेंगे तो उसमें पेरेंट क्लास की मेथड यहाँ से
पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोल रहे हो, ओवरराइडिंग। हाँ, मतलब ओवरराइड हो रहा है, अगर उसमें है और इसमें भी है हाँ, तो उस मेथड को अगर तो सुपर से एक्सेस करोगे तो पैरेंट का एक्सेस हाँ होगा, वही वही मतलब पेरेंट के एक्सेस करने के लिए सुपर यूज करते सुपर यूज करोगे। और दिस से आप इसको, जैसे अगर यहाँ पे आप जो बोलो स्पोर्ट्स कार में हमने किया था ओवरराइडिंग, राइट। Overriding में we had this acceleration method. Now, when we are accessing this acceleration method using object of sports car, this is a child class, right? इससे अगर मैं acceleration को access कर रहा हूँ तो ये कहाँ से ये हो रहा है, sports car से, because ये override हो गया है ना। यहाँ पे मैंने एक deliberately method लिखा हुआ है, specific method which belongs to sports car, तो priority इसको जाएगी इंस्टेड ऑफ पैरेंट क्लास। बट अगर मुझे इसमें एक्सेस करना है पैरेंट क्लास के एक्सेलरेशन को, तो आई विल जस्ट से सुपर डॉट एक्सेलरेशन। नाउ दिस एक्सेलरेशन मेथड बिलोंग्स टू कार, ओके। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूंगा दिस डॉट सी, अब ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, स्पोर्ट्स का, बिकॉज दिस जो है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स का क्लास, तो वो एक्सेलरेशन ओवरराइडेड, जो ओवररिडन एक्सेलरेशन मेथड है उसको एक्सेस, दिस ऑलवेज एक्ट्स एज अ इंस्टेंस ऑफ सेम क्लास, सुपर एक्ट्स एज अ इंस्टेंस ऑफ पैरेंट, राइट। तो इसके आपको कहीं कहीं पे यूसेज आ सकते हैं और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सुपर और रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन। Now we will understand a new concept related to interface. Okay. And, so आपने OOPS concept में abstraction पढ़ा होगा, abstraction सुना होगा। Abstraction as in you are not, जो आप methods को define करते हो वो आप access कर सकते हो, right? आप उसको you are able to view it, right? But interface और abstract class में आप method define नहीं करो। तो I'll explain this part, okay? एक चीज समझ लेना, ये आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, you don't have to create this thing in WebDriver. See, in case of WebDriver, all these things are created. Interface is already created. You just have to use it. But you need to understand the concept of interface. What is interface and how does it work? So for that only I'm explaining. Otherwise, you don't have to implement it. You don't have to create an interface. You don't have to create an abstract class, and you don't have to use it. Okay. Sure. Let's create an interface. See, normal case में हम लोग क्या करते हैं, एक class create करते हैं यहाँ से, और you can say right click, new class. This is how we create a class. Interface is just below it, okay, that is this one. So if you click on it, now you can see object वाला जो super class है वो option यहाँ से चला जाएगा, okay, that is not there. Now you just have to give the name of interface. I will say interf A. Let me create another interface. Okay, so two interfaces are created, and you can see there is I, very small icon of I, small I is there, okay, just to mark it as an interface. The other ones are simply class. Okay, यहाँ पे अगर आप देखो छोटा सा एक I दिखेगा. Now basic difference between interface and class is, I'll remove this part. In case of interface, methods are declared. Not defined. Methods are declared and not defined, whereas in case of class, methods are defined. Okay,
when we say defined and declared, that means आप अगर यहाँ देखोगे, this is a method, okay, and it is defined. The logic is defined. आपने लिखा है logic उससे, right? तो normal एक simple class होगी, तो वहाँ पे आप मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते. आप मेथड लिख रहे हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ इंटरफेस, methods are only declared and not defined, right? I'll explain why this happens or why you can do this way. So let's go with interface here. Now I'll say simply public void display. Just consider this way. Now I cannot write this way. मैं curly braces करके यहाँ इस तरह से नहीं दे सकता interface. See what it says. Abstract methods do not specify a body. So this is actually an abstract method. We don't write the keyword abstract, but by default वो abstract ही रहता है. Okay. ये body section नहीं आएगा interface के केस में. So I just have to remove and just do a sample. ये आप क्लास लेवल पे नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा. तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखो या नहीं लिखो, राइट, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट. मतलब आप नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट तो एब्स्ट्रैक्ट है ही, ओके. तो यू डोंट हैव टू राइट, बाय डिफॉल्ट इट इज एब्स्ट्रैक्ट. Okay, abstract means it does not have a body. That is a simple logic. Now हमने declare तो किया और define नहीं किया, तो define नहीं करेंगे तो method का कोई meaning है? There is no meaning, right? So define कहाँ करते हैं हम लोग? Class level. Okay, define कहाँ करते हैं? Class level. So over here you can say methods declared inside interface are defined inside class which inherits them. So there is an inheritance concept between class and interface. Okay. Normal case में हम class to class करते हैं inheritance, extends keyword use करके. But in case of interface, we will write this way. Okay, we write it down over here. So again, okay. And then we will use a keyword implements. Okay, class name implements interface name. So this is the keyword you are using, and it like it is self justified, right? Implements means आप ये जो इंटरफेस के मेथड्स हैं वो आप कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हो? क्लास में. सो क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस. गेटिंग इट? दैट वे दिस कीवर्ड कैन बी जस्टिफाइड. ओके. और वहाँ पे हम लोग नॉर्मल क्लास टू क्लास करते हैं तो क्या लिखते हैं? क्लास नेम extends another class. Okay, this way we write. So this becomes your parent class and this becomes your child class. तो यहाँ पे extend कर रहे हो, definition को extend कर रहे हो, बढ़ा रहे हो. इसके variables और methods तो access कर ही सकते हो, साथ साथ में इसके खुद के variables और methods भी access कर सकते हो. So you are extending it. Clear up to this part? चलो, now let's create a class and implement interface. So what I will say, I will create a class, and I will say class A. Okay. Method class A implements interface. Now you can see there is a red line below class A, right? If you mouse over, what it says, the type class A must implement the inherited abstract method interf a.display. Means it has inherited the method. So
that means you can understand that there is an inheritance between interface and class also, and it is compulsory to implement it. If you don't implement it, then there will be a red line. That means there is an error. You have not implemented it. Right. So what are the two quick fixes? Add unimplemented methods. So just write this way. You can remove this. अब यहाँ पे आप definition लिख सकते हो उसका, define कर सकते हो. So let me just say integer I, and I'll say just sys out. Okay. और main method में मैं class A के object से using this object I can call display method. Okay. So this display method belongs to interface A, but you have implemented in class level, and you are calling, when you are calling this display method, तो ये display method कहाँ से call हो रहा है? Class A से, isn't it? And not interface A. आपने उसको Definition class में. हाँ, because implementation is in the class level. Same way I can do over here. Okay, I can just copy this. So this was the problem you have seen in case of multiple inheritance, है ना? अगर दो क्लास है, right? मैंने एक्सप्लेन किया था, right? ये वाला क्वेश्चन. This way, class A and class B, if they both are having acceleration method, और अगर आपकी child class है class C, तो if I am writing extends A, B और class C का मैं object create कर रहा हूँ, तो वो C object से acceleration method कॉल करूँगा तो कौन सा आएगा? A या B का? There is an ambiguity. So I have said multiple inheritance is not possible in Java, but it can be achieved using interface, right? तो अभी हमने देखा कि inheritance हो रहा है interface में, right? So display method अगर आप यहाँ पे call कर रहे हो, and if I say implements interf A and interf B, I can write this, okay? But the implementation is only one. Now you are not getting a red line below class A saying that कि आपको interface B के भी method को यहाँ पे implement करना होगा, right? Because interface A में same signature है और interface B में भी same signature है, तो method मैंने एक ही बार define किया है, declare दोनों interface में declare है, लेकिन define मैंने एक ही बार किया है, यहाँ पे आपको error नहीं आएगी. So ये multiple inheritance हो गया. This is we have achieved the multiple inheritance. So I have explained you this topic. The reason is there are many interface created in WebDriver. WebDriver itself is an interface. Okay, and the methods of interface WebDriver are implemented in different classes. Okay, I'll just show you that part so that you will get a better understanding how they have implemented it. Okay. See, अगर आप Selenium, this is the official website selenium.dev. So download section में आप जाओगे तो you can see Selenium client and WebDriver language binding. See, we are going with Java. As such, you can go with C#, Ruby, Python, JavaScript, other languages, and there are other languages also. Now there is a API docs, okay, which will lead you to the all the interface classes, packages, methods, constructors, वो पूरा list है.
go with friends. See, you can see this package, which is the package org openqa selenium, right? जैसे हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, इन लोगों ने भी पैकेज क्रिएट किया. लेट्स क्लिक ऑन दैट. Now you can see interfaces. Okay, so alert is an interface, and see WebDriver. WebDriver is a interface. When you click on it, you can see interface, WebDriver, and all known implementing classes. ये सारे जितने भी classes हैं, वो सब इसको implement करेंगे. So Chrome driver, Chromium, Edge, okay, Firefox, Internet Explorer, जितने भी आपके ब्राउजर के नाम हैं, एक्चुअली इनडायरेक्टली करते हैं. ये वेब ड्राइवर को जो इम्प्लीमेंट करेगा वो है रिमोट वेब ड्राइवर. राइट, लेट मी ओपन दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज मेनी टाइम्स इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते भी हैं. सी व्हाट इट सेज, पब्लिक क्लास रिमोट वेब ड्राइवर, इट इज एक्सटेंडिंग java.lang ऑब्जेक्ट. मतलब इस क्लास में आपको जावा के सारे methods accessible होंगे, classes available होंगे, and then it implements WebDriver. Okay, that means कि WebDriver के जितने भी methods हैं, let's go back to WebDriver. So this is nested class, method summary. So close, find element, get current URL. These all are nothing but methods which belongs to WebDriver interface. Right? अगर आप रिमोट वेब ड्राइवर में जाओगे तो उसके मेथड्स अलग होंगे. उसके मेथड अलग. These are overridden methods, right? Find elements. It is deprecated also. Now if you go to Chrome driver, or let's go to Firefox driver. Now you can see public class Firefox driver extends remote web driver. यहाँ पे simple inheritance हुआ, class to class inheritance हुआ, and then it says implements. Okay, and all these are interfaces. Okay, so how does this look like? इस तरह से रहेगा, right? There is an interface web driver, okay, which is implemented by remote web driver. Okay, and remote web driver class is extended by Firefox. So these two are classes, and this is an interface. Okay, so इसके जितने भी methods होंगे, you can access it over here. Okay, so that is the implementation they have. So इसमें वेब ड्राइवर के मेथड्स डिफाइन कहाँ होंगे, रिमोट वेब ड्राइवर में कि फॉक्स में? नहीं, डिफाइन यहाँ पे होंगे. डिफाइन यहाँ, अगर ओवरराइड करना होगा उन्हें तो फिर वो यहाँ पे यहाँ पे. Okay, so always you can, if you want to go through the methods and everything, you just have to go to the API docs. You can refer to it later on. Okay. Once you are experienced and comfortable with all these things, आप इसको रेफर कर सकते हो. You will be, अभी आज पहली बार देख रहे हो, so probably you might be feeling कि इतना सारा है. Okay, I won't be able to understand. But as soon as you get comfortable with all these automation things, after 1 year, 2 years, then you will be definitely able to refer to these things. It's not a big deal. आप जो भी सब इसमें डिफाइन है वही यूज करो. तो जब एक बार आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे, then it will be more easier. So, sorry. Fine. Clear up till this part, guys? Understood? एक एक इंटरफेस जो है वो दो जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. हो सकता है. दो
दो जगह पे इम्प्लीमेंट हाँ, आप एक और क्लास बनाओ। दो क्लास में एक ही इंटरफेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हो आप, एक और क्लास बनाओ, क्लास बी, and you can say implements A. This is perfectly fine. Okay, you can do this. तो वो जो रिमोट वाला जो वेब ड्राइवर था, वो एक इन बिटवीन उन लोगों ने एक बना दिया कि अगर वो नहीं रखेंगे तो भी हर एक ब्राउजर के लिए दे कैन मेक अ क्लास एंड इम्प्लीमेंट इंटरफेस वेब ड्राइवर। हाँ, बट फिर वो मल्टीपल इंटरफेस हो गया ना। हाँ, ये भी ऐसे ही हुआ, ये तो क्लास अलग अलग है, इंटरफेस एक है। लेकिन उसमें जो ब्राउजर था, ब्राउजर का इंटरफेस नहीं था ना। ब्राउजर का उसके तो class- फायरफॉक्स ड्राइवर इज अ क्लास। वो वही है, सपोज क्लास है, क्लास बी इज अ वन क्लास फॉर One वन class. वन एक्सप्लोरर, हाँ, समझो। और उसके जितने भी इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं, ऑन ऑफ या ओपन क्लोज, वो सारे यहाँ उस ब्राउजर के लिए यहाँ इम्प्लीमेंट्स होंगे। So remote web driver में they are able to access, means they are defined. तो ऐसे कोई कॉमन मेथड होंगे वो रिमोट वेब ड्राइवर में है, या ऑल द मेथड्स अवेलेबल इन All the methods have to be implemented. इंटरफेस में अगर आपके जितने मेथड्स है 50 मेथड है तो दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। आप एक मेथड भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो इट विल गिव यू एन एरर। से फॉर एग्जांपल इंटरफेस में डिस्प्ले है, अभी यहाँ पे मैं आई विल से पब्लिक void show, okay, and save this. Now I'll get an error over here. See, it says must implement the inherited abstract method this. So all the method have to be implemented. You cannot do without implementation. वही थोड़ा इंटरफेस एंड क्लास वो दोनों सेम काम कर सकते हैं, तो इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है ना इंटरफेस में, आपने सिर्फ मेथड को कहीं ना डिक्लेयर कहीं तो किया। करना पड़ता है, हाँ कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ता है। हाँ, बट वो क्लास लेवल पे आप अपने लेवल अपने हिसाब से कर सकते हो ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल, अदरवाइज नॉर्मल क्लास के हिसाब से पॉसिबल। So then definitely there is a need of it, then that's why they have created interface. So this is the basic reason. आप define अपने हिसाब से कर सकते हो। They have created a method. Now say for example class A में you want to display this I variable. Class B में I want to display another thing, integer I B equals 30. So मैं वो display करूँगा. So my implementation is different. So that is a flexibility I am getting. Otherwise inheritance में क्या होता है, आप जो क्लास पेरेंट क्लास में है वही आप एक्सेस कर सकते हो, और नहीं करना है तो फिर आप ओवरराइड करते हो। मतलब ऐसा बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट ये इंटरफेस जो है उसमें डिफाइन कर लिया कि इतने फंक्शन आपको बनाने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, इफ यू वांट टू यूज द इंटरफेस कैसे बनाते हैं, देन यू कैन इंडिविजुअल क्लास जैसे क्रोम ड्राइवर है तो क्रोम ड्राइवर कंस्ट्रक्टर जो होगा वो फिर वो क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा, फायरफॉक्स का कंस्ट्रक्टर होगा वो फायरफॉक्स को ओपन करेगा। Clear? So similar to this we have one more thing, that is abstract class. Okay, again abstract class are not used in WebDriver also, but that is a concept in Java, and many times people do ask a difference between interface and abstract class. So in interface we are getting 100% abstraction, as in आपके सारे methods abstract होते हैं, but abstract class में you might have abstract methods and you might have non-abstract method. Non-abstract मतलब define किया होगा, and this is a class.
This is not an interface, right? So let me create a class over here which is abstract. So I'll say class. It's a normal class, okay? So I will say abstract class. This name you can give any name, okay? Just, but then you have to say abstract. That is a basic difference. Okay, you have to give this abstract. Then only this will become an abstract class. Now you can say public, okay, void display. This is possible. Okay. Okay. So over here, see, interface के case में आप abstract नहीं लिखो तो it's okay. But in case of abstract class, if you don't want to define, then you have to write abstract. Okay. Then it will understand this method is an abstract method. अगर आप नहीं लिखते हो तो it will give you an error. Say this is an error. Non-abstract class में हम लोग abstract method नहीं बनाते. Right, so this method requires a body instead of a semicolon because we have not written the abstract. तो यहाँ पे दूसरा है change abstract class dot display to abstract. So I will say abstract and abstract. So this is important. So that is a basic difference. So interface will have only abstract methods. Abstract class will have both non-abstract and abstract methods. Variables are static and final. Variables are static or non-static and final or non-final. Okay, both it can have. We cannot instantiate interface. We cannot instantiate abstract. आप object create नहीं कर सकते interface और ना फिर object class. Normal class का ही object आप create कर सकते. That is a. This is a basic difference between abstract class and interface. This is what we have to learn. And so I'll share this thing with you guys. Okay. So up till today we'll keep up till this part. Tomorrow what we can do is we can pick up